Hello and welcome to MPPSCADDA. Welcome to the today's session of Drona mentorship classes, and we are discussing a very important topic, that is our first Western thinker Socrates. We have already taken 3 classes covering different dimensions of the topic, different contributions of Socrates, Socratic problem, Socratic epistemology, Socratic method, and the Socratic ethics. From the first class, I am telling you all that we are going to study everything in a very structured manner so that we can understand from where the questions are coming in the examination. एंड जैसे क्वेश्चंस आते हैं उस हिसाब से हम कैसे उन्हें आंसर कर सकते हैं. डू वी हैव द सफिशिएंट कंटेंट फॉर आंसरिंग क्वेश्चन और नॉट. सो वी नीड टू सी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. So we have covered the whole content related to the Socrates in the previous 3 classes. And if you have not watched it, just watch all the lectures. उसको देखिए, उसको समझिए, उसको सुनिए. तभी हम आज जो डिस्कशन पे आए हैं, मैंने आपसे बोला था, we will try to answer the question which is asked in MPPSC 2024. It's a very important 11 marker question. And how can we answer that? To answer these kind of questions, we must have a very strong conceptual understanding and strong foundation of the topic, especially the epistemology part, right? And how the Socrates is linking the two concepts of virtue and knowledge. So in the just previous class, we have discussed this concept in detail. In the today's class, we are trying to understand how can we answer the question in the word limit and how can we draft our answer. Because once you are understanding a topic, the content goes beyond the word limit, but when you are writing an answer, we need to limit ourselves within the 200 words, and we need to draft the answer with the keywords and with highlighting the important terms by underlining them and structuring answer so that in such a lucid manner so that examiner can understand our answer. We tempt him so that he can read it completely and give us marks. That's our duty to do as an aspirant, right? So let's see how can we answer a question. You can see on the screen the question says that the virtue is knowledge, discuss according to Socrates. The same question have come in the 2 marker also, but answering a 2 marker is easy relatively, because once you have the understanding, answering 11 marker in this topic is tough because the subject matter is very small, that is virtue is knowledge. So how we can expand it, right? So let's see one by one what does the question means and how we need to start. So first thing is an 11 marker question is you need to start with the introduction. You need to start with the introduction, right? So the introductory part is the Socrates, the father of the Western philosophy, proposed an ethical doctrine. He proposed an ethical doctrine. देखिए ये term बहुत ही technical है. We have studied virtue is knowledge, virtue and knowledge under the which topic? Socratic ethics. किस topic के अंदर हमने पढ़ा था? Socratic ethics के अंदर हमने पढ़ा था in the previous class. That's why this statement is technically correct. Socrates, the father of the Western philosophy, which we have studied in the first class, why he was called as the father of Western philosophy. In the previous third class, we discussed about the Socratean ethics. That's why I've used this word. He proposed an ethical doctrine called as the virtue is knowledge. And what he argued in that, what reason he gave? He argued that the moral excellence stems not from innate character or divine intervention. What he's saying that the innate character and divine intervention is not going to bring any moral excellence or virtual excellence in you or virtuous action in you, right? So how can we achieve the state of wisdom, state of courage, and acquire those virtues? Only with the help of the rational understanding of the good and evil, only through the inductive reasoning and attaining the universal valid knowledge. And that universal valid knowledge basically is the rational understanding. So what Socrates is proposing to us is कि ऐसा नहीं है कि कोई भी human being बचपन से ही morally good होगा, कोई डिवाइन इंटरवेंशन के कारण वो मॉरल एक्सीलेंस को चेस करेगा. इट इज नॉट लाइक दैट. अनटिल एंड अनलेस अ ह्यूमन बीइंग अराइव्स एट द आइडिया ऑफ गुडनेस बाय रीजन, he will not chase moral excellence. That is the precondition to achieve that, precondition to attain that moral excellence. And moral excellence means practicing the virtues, the good actions, the good things. So this statement is technically correct,
and it has been drafted accordingly. So you must learn to write these kind of statements in the examination. Okay, never keep the loose ends open in your answer कि हमने कुछ लिख दिया, एग्जामिनर बाकी समझ लेगा. एग्जामिनर उतना ही समझेगा जितना आप लिखेंगे. Examiner is not going to put any extra minute or effort in understanding. You must make him understand your answer in a lucid manner. That's your responsibility, right? So this is the first point, right? So that is the introductory part about what his contribution is in the ethical doctrine. And next point is the what he was called as the father of Western philosophy, right? And moral excellence is not possible without the rational understanding. So moral excellence is virtuous actions and rational understanding is related to knowledge. तो कहीं ना कहीं हम इंट्रोडक्शन में ही हमने क्या क्रिएट कर दिया, एक फाउंडेशन डाल दी हमारे आंसर की, which we are going to justify, that is virtue is knowledge. Then what we will do is we will define the term virtue, that is the core of the Socratean ethics. So how will we define that? So first duty is define the terms mentioned in the question. Introduction कर दिया आपने, अब keyword explain करेंगे, right? So virtue, the core of the Socratic ethics is the concept of virtue, good thing or good actions. So virtue is the highest aim and the greatest good any human being can seek. This is the point of view of whom, or point of view of the Socrates. So virtue is the highest aim and the greatest good anyone can seek in life, and it must have the universal consistency. That's also we have studied in the previous class, राइट तो जिसने क्लास नहीं की है प्लीज वो देखे, यूट्यूब पे भी फ्री है, आप सब देख सकते हैं, राइट? इट्स ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन ऑल्सो. जहां बच्चे वॉच कर रहे हैं उसे जरूर देखें. दैट virtues are the highest aim and the greatest good, and it must have the universal consistency, and it must be the same for all. It must be the same for all, right? And that's how you arrive at the concept of knowledge. See, we are making the links visible. Kaise? Now, what is universally consistent and the same for all is basically called as knowledge, according to Socrates. So how we are, what understand the flow of the idea, how we are moving ahead. Once we have defined virtue, then we said that it must have universal consistency. Then we said that the universal consistent means it must be the same for all, and then we said that it must be called as the knowledge because it is same for all. And why knowledge is same for all? Because we studied in the previous class that it is based on reason, and reason is what? Omnipresent, means available to all. And that's why, because reason is available to all, that's why knowledge is universally valid for all, right? That was the connection we established in the previous class. We understood the concept of virtue and knowledge. Is it clear? चलिए, अब हम आगे इसको स्टैब्लिश करेंगे अपने आंसर में कि नॉलेज एज द मॉरल कंपास. नॉलेज ही मॉरल कंपास है. क्यों? क्योंकि हम वर्च्यू और नॉलेज को अलग नहीं कर सकते. तो अगर हमारे पास नॉलेज आएगा तो हम मॉरली करेक्ट डायरेक्शन में जाएंगे. सो मोर द नॉलेज, मोर द विजडम, मोर द वर्च्यूज, मोर द मॉरल एक्सीलेंस, मोर द ग्रेटेस्ट गुड. जो मैंने बात बोली मैं फिर से बोल रहा हूं, more the reason, more the knowledge, more the wisdom, more the virtue, more the moral excellence. Clear? So that's why we have written down knowledge as the moral compass. So Socrates believed that the true knowledge leads to virtuous action. If a person genuinely understands what is good, they will automatically do good. If someone genuinely understands का सर मतलब ये है, क्या मतलब है? मतलब ये है it is reasoned, well reasoned, right? Thus ignorance, not evil, is the root of immoral behavior. So there is no divine intervention. So at the same time, Socrates is also cancelling out the intervention of the evil in doing something immoral in the society or seeing something immoral in the society. So if knowledge is the root of goodness, ignorance is the root of immoral behavior. Is it done? So we have defined two fundamental concepts, that is virtue and knowledge. Now we are going to identify it further,
and explain it further, the different dimensions of the virtues which we have discussed earlier. So now we are drafting it as an answer. So we are writing as virtue as wisdom. So virtue is knowledge and virtue as wisdom, the same thing. So for Socrates, virtues is a form of wisdom because qualities like courage, justice, and temperance are not emotions but rational understanding of the ethical truths. तो यहां पे मैंने आपको पहले भी बताया है कि विजडम ऑफ सॉक्रेटिस इज सेम एज नॉलेज ऑफ सॉक्रेटिस. सर क्या बोला आपने? अगेन आई एम सेइंग दैट विजडम is equal to knowledge in the philosophy of whom? Socrates. तो हमें ये बात तो पता है कि करेज, जस्टिस एंड टेम्परेंस आर दी वर्च्यूज, बट ये वर्च्यूज किस पे डिपेंडेंट होते हैं? विजडम पे, और विजडम ही नॉलेज है, इसीलिए अल्टीमेटली वर्च्यू इज नॉलेज. यहीं तक तो हमें आना था और हमने जस्टिफाई कर दिया, हम इसी को डिस्कस किए जा रहे हैं. वर्च्यू इज नॉलेज, राइट? बट नाउ इसको हमें और इलैबोरेट करना होगा. इट्स 11 मार्कर क्वेश्चन. व्हाट वी कैन राइट द फर्दर डायमेंशंस अबाउट दी वर्च्यूज. क्या डायमेंशंस बोले गए थे वर्च्यूज के? यूनिटी ऑफ वर्च्यू. ये भी बताया गया था सॉक्रेटिस के अकॉर्डिंग. ही आर्ग्यूड दैट ऑल वर्च्यूज आर वन and grounded in the knowledge of what benefits the soul, because all the virtues ultimately work in united fashion, in synchronization fashion, for what? For the benefit of the soul, for the nurturing of the soul, for the health of the soul. तो अगर सारे वर्च्यूज एक ही डायरेक्शन में एक साथ मिलके काम कर रहे हैं तो सारे वर्च्यूज यूनाइटेड. ऐसा नहीं है कि कुछ वर्च्यूज तो गुडनेस की तरफ जा रहे हैं, कोई वर्च्यू आपको इविल की तरफ लेके जाए. दिस इज नॉट पॉसिबल. अगर कोई इविल की तरफ लेके जाएगा तो वो वर्च्यू नहीं कहलाएगा, क्योंकि फिर वो इग्नोरेंस से आएगा, और इग्नोरेंस और वर्च्यू एक जैसे नहीं है, क्योंकि वर्च्यू और नॉलेज आर सिमिलर. तो सारे वर्च्यू यूनिटी है, यूनिटी में फंक्शन करते हैं एंड यूनाइटेडली वर्क करते हैं, और सब के सब इक्वली इंपॉर्टेंट है बिकॉज वन लीड्स टू अनदर. ऑल हैव द नॉलेज एट इट्स रूट्स एंड ऑल आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द हेल्थ ऑफ द सोल. Clear? I'm trying to make the things very clear to you. With the vocabulary section, it is really tough in the starting, but with time and with correct terminology of the philosopher, things get easier. मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपने फिलोसोफर की टर्मिनोलॉजीज नहीं पकड़ी, उनके टर्म्स नहीं पकड़े, तो आप उनके आंसर्स भी नहीं लिख पाएंगे. इसलिए बार बार मैं आपके कुछ फंडामेंटल टर्म्स को रीआइट्रेट कर रहा हूं, ताकि आपके माइंड में एच हो जाए, वो लकीर खिंच जाए हमेशा हमेशा के लिए, कि जब आप सॉक्रेटिस की बात करेंगे तो इन्हें यूज करेंगे, जब आप प्लेटो की बात करेंगे तो इसे यूज करेंगे, जब आप आदि शंकराचार्य की बात करेंगे तो ये पर्टिकुलर टर्म्स ही यूज करेंगे. Right? What he said next: ethical behavior as the intellectual mastery, which means self-control, honesty, and justice stem from the intellectual understanding. ये भी virtues हैं: self control, honesty, justice, courage, temperance, perseverance. ये जो जितने भी virtues हैं, ये सब किसके outcome हैं? Intellectual mastery के. And intellectual mastery का मतलब है inductive reasoning के, very good inductive reasoning. And that's how Socrates led the birth of new ideas in the mind of his disciples like Plato and Xenophon. And that's why he termed himself as the midwife, because he is helping others to grow. तो basically वो लोगों को क्या सिखा रहे हैं? वो knowledge नहीं सिखा रहे हैं, वो intellectual inquiry करना सिखा रहे हैं. अगर आपने प्रोसेस समझ लिया तो आप आउटकम्स पे अपने आप आ जाओगे, और एक बार आउटकम्स पे आ गए तो वर्च्यूज अपने आप आएंगे जो यूनाइटेडली वर्क करेंगे हेल्थ ऑफ द सोल के लिए. Clear? So that we have reiterated at least 20 times in the previous classes and today's class also, and my only motive is to make these words memorable for you and forever. राइट? सॉक्रेटिस इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन. तो फिर किस तरह की एजुकेशन देनी चाहिए हमें पूरे ग्रीस में, पूरे एथेंस में, या पूरी ह्यूमैनिटी को? तो सॉक्रेटिस एम्फसाइज्ड दैट बाय टीचिंग इंडिविजुअल्स टू रीजन एथिकली, सोसाइटी नर्चर्स वैल्यू, वर्च्यू.
राइट। कहने का मतलब एथिकल रीजनिंग का क्या मतलब है, अगर आप सोल की गुडनेस के लिए, हेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए रीजन करते हैं तो आपकी इंक्वायरी ऑटोमेटिक कैसी हो जाएगी, एथिकल। और आपको वेल रीजन यानी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, अगर ये हम बच्चों को सिखाएं एथिकल रीजनिंग करना, तो सोसाइटी में वर्च्यूज नर्चर होंगे, और वर्च्यूज नर्चर होंगे तो जस्टिस स्प्रेड होगा, एम्बिवेलेंट हर जगह मिलेगा, ओमनी प्रेजेंट जस्टिस आएगा, वेलबींग ऑफ द सोल होगी, वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल होगा, और अल्टीमेटली इंडिविजुअल अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करेगा, दैट इज हैप्पीनेस। एंड दैट इज हैप्पीनेस मींस नो योरसेल्फ, अगर वो अपने आप को फाइनली समझेगा तो हैप्पीनेस की तरफ पहुंचेगा। क्लियर? तो बात समझ में आई आप लोगों को? सो दैट्स हाउ वी नीड टू अप्रोच, इट्स अ प्रॉपर 200 वर्ड्स आंसर which you can see on the screen, which you have just discussed, right? And this answer is a template for all of you to understand how we need to approach answer writing in the mains examination. And don't ever try to think that कि अगर हम अच्छा आंसर नहीं लिखेंगे तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे। द कॉम्पिटिशन इज कट थ्रोट एंड स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट। आई एम जस्ट टेलिंग यू, एवरीवन इज वर्किंग डे एंड नाइट। सब अपनी 100% मेहनत कर रहे हैं और सब बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं। द स्टूडेंट्स आर कंटिन्यूइंग द टेस्ट सीरीज विथ अस, स्टूडेंट्स आर कंटिन्यूइंग द डेली आंसर राइटिंग विथ अस, एंड स्टूडेंट्स आर राइटिंग वेरी गुड आंसर्स। सो लेवल अप योर प्रिपरेशन, लेवल अप योर प्रिपरेशन। द सीट्स आपको पता है कितनी कम आ रही है, कंपटीशन कितना हाई है, एंड वंस यू विल लर्न इट यू विल गेट इंटरव्यू कॉल। आई एम जस्ट अश्योरिंग यू, सिंपली अश्योरिंग यू कि जैसे जैसे आप चीजें सीखेंगे वैसे वैसे आप इंटरव्यू की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। So this session of today was to teach you how to draft an answer, an introduction, then the definition of the key terms, then connecting the key terms and writing within the word limit, introduction of the important terms as the bold, मैंने bold किया है, आप उसे underline कर दें एग्जाम में, आपको definitely you will score very good marks. ठीक है? So whatever we have studied, I've completed the topic. We have studied about Socratic problem. We have studied about Socratic epistemology. We have studied about Socratic method. We have studied about Socratic ethics. We have also solved the previous year question based on Socrates, and that's how we completed the topic. And now you can answer any question which can be asked in the examination. तो इसी डेडिकेशन के साथ होपफुली आप सबने नोट्स बना लिए होंगे, right? If you have any query related to the topic, you can definitely connect with me at our number, as you can see on the screen. तो आप शुरू कर सकते हैं अपना पर्सनल आंसर राइटिंग भी, अगर आप करना चाहते हैं, आपको सीखना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है सर इस तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे पढ़ें रेगुलरली, आप मेंटरशिप बैच कर सकते हैं, राइट? वी विल प्रोवाइड यू नोट्स, आप नोट्स पढ़ें और डेली आंसर राइटिंग करें उसके बेस पे, like that. So there are multiple things according to your convenience and your stage of preparation you can connect with us. Thank you very much. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।